Good morning, all of you. Am I audible to all? Ma'am. Okay. So, yes, Yogita ma'am, are you there? Yogita ma'am, are you there? Yes, Yogita ma'am, are you there? Am I audible to all, right? Yes, ma'am. Okay, let me check. Yes, you're audible. Okay. Okay. So, good morning, all. Good morning, ma'am. Okay. So, we'll start with the questions. Last time we discussed case report form and edit check specification document. So, yes, any doubt in these two topics? Hope you all go through to all these topics. So, yes, tell me any issue, any doubt? Yes, no? Yes, no doubt. मैम हाँ. ये वो एडिट चेक स्पेसिफिकेशन में एक फ्लो चार्ट है उसके प्रोसेस के लिए वो मतलब याद करना जरूरी है क्या? नहीं नहीं, आपको फ्लो बस जो फ्लो मैंने आपको बताया उतना आपने याद रखा. देन डन. Just only can you give short description for added check specification only? Just short description only. Yes, can you please repeat?
Can you give just short description for edit check specification only? Yes, yes, yes. So we'll repeat both the topics, but now I need to understand what you understood. Okay. Any doubt? Yes, yes. So, okay. So you have a doubt in edit check specification document, and I think UAT as well. Okay, some student asked me about UAT. Okay, we'll explain the UAT. So, CRF, any doubt in case report form? No Can doubt. anyone tell me the flow of case report? Yes. So can anyone tell me the flow of case report form? What you understood in case report form? Case report form is an electronic document designed to record all protocol require information on each subject in a clinical research and study. Okay. Hmm. And there are many case report forms. For example, adverse event, demographic, inclusion exclusion criteria, medical history, and uh, prior and concomitant medication, serious adverse event, vital sign, end of study form. Yes, there are some common forms and there are some study specific forms. Okay. Okay, so we'll quickly revise these two topics. Okay, so first is the CRF case report form. So the case report form is a printed optical or electronic document designed to record all protocol required information on each subject in a clinical research study. So the flow is first we receive a protocol. So first we need to review protocol thoroughly. So once we understand, once we review protocols, once we clear with the protocol, then the next step is the design of case report form. So the input document we require to design case report form is the protocol, only protocol. Okay. By using protocol, we design case report form. Okay, so the case report form, how we design. So we use data management team use a application in design, or it depends on the organization to organization which application they are using. If the company is third party, then they receive CRF from the sponsor side. So no need to design this particular CRF in your organization. Okay, so for example, TCS Cognizant, they receive a ready-made case report from the sponsor. Okay, then the sponsor company need to create this particular document. Okay, by using application. Okay, so this case report form. So we already see how the case report form look like, the PDF document. So data management team needs to create a PDF document with screen. So there are some common forms and some other study specific forms. So common form we directly copy paste from another study, but the study specific form we need to create by using a logic. Okay, by using a protocol. So the common form and the general forms are the adverse event, demographics, inclusion, exclusion criteria, medical history, subject visit, physical examination, concomitant medication, essays, study completion form, vital sciences, death form. So these are some common forms. And the study, we also saw a study specific example, CRF example. So this is all about the case report form. So once the team create this particular case report form, the study needs to share this particular form with the database programmer. So what programmer do? Programmer can build this particular screens into the database. Okay, so as it is screen, they built into the database. So once they built all the screen into the database, they confirm that we already done our activity. Then the data management team needs to create or to check this particular object test screen. This is called the screen UAT. So they need to test or check whether all the screens built as per PDF document or not. So this is called the screen UAT. Okay, so this is all about the case report form.
So another activity we need to perform is the edit check specification document. So we already see this is the edit check specification document is an Excel sheet and having a multiple tabs. Okay, version history, edit check, manual checks. So there are some multiple tabs present into the edit check specification document. Okay. Sorry. So the input document we require for the edit check specification document is the CRF, which we create before edit check specification document, then the protocol, then the global library. So it depends on the study organization to organization, global library. So which form we take from the global libraries? General forms, that is a adverse event, demographic, inclusion, exclusion category. That particular the check related to that form, adverse event, demographic, inclusion, exclusion criteria, we directly copy paste from the global library. And the study specific form we need to create our own by using a logic. So these are the input documents required for the edit check specification document. So we already see how this particular document looks like. We see the edits. So we need to check that particular edit. So edit check specification, once the team create edit check specification document, same as the CRF. Again, we need to share this particular specification document with the programmer. What programmer do? Programmer build this particular text into the database. Again, we need to perform UAT, whether all checks built it appropriately or not. So we need to perform UAT, edit check UAT. So there are two types of UAT, screen UAT and edit check UAT. So we need to test data into the test environment. Okay, to cross check whether all the checks appropriately incorporated or not into the database, query is firing or not. So this is all about the edit check specification document. So this is the flow. So now any doubt, any confusion? Yes? No. Yes. Okay. So anyone want to try? So these are interconnected case report form and the edit check specification document. These are the connected documents. Okay. सबको समझा? Or you want me to explain again? Yes. सबको कंफर्म करना है. Okay. So we'll start our today's topic. The topic is the protocol. So we'll protocol. My screen is visible? Yes, ma'am. Yes. Yes. Okay. So the protocol. So I already said many times the protocol, the most important document is the protocol in any clinical trial. So first document we receive is the protocol. So protocol contain all the study related information. So background, rationale, objective, design, enrollment criteria, methodology, data recording, statistical consideration. So all information present into the protocol. So सबसे पहले प्रोटोकॉल आएगा. प्रोटोकॉल रिव्यू करने के बाद वी मूव टू द नेक्स्ट एक्टिविटीज एंड द डॉक्यूमेंटेशन पार्ट. सो द प्रोटोकॉल इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट. ओके, सो द प्रोटोकॉल. सो definition. The protocol, a clinical research protocol is a document that describes the background, rationale, objective, design, enrollment criteria, methodology, data recording requirements, statistical considerations, and organization of a clinical research study. So all information present Then into can the we go on protocol. So that is why.
PPT Yes. mode. Can you go on PPT mode? हाँ. Fine. Yes. Okay. So protocol contains all the information. That is why first we need to review protocol. Then we need to start our study. Okay. So a research protocol. Protocol is a document that outlines the study plan for a clinical research project. The study plan must be carefully designed to safeguard the health and the safety of a participant as well to as answer specific research questions. So we already discussed in IRB IEC. So IRB IEC review all the protocol. Once they assure the protocol is safe, then only they approve this protocol. Okay, so we all know the protocol ऐसे ही नहीं आ जाता. प्रोटोकॉल अप्रूवल के लिए बहुत सारा क्राइटेरिया रहता है. आईसी एफडी जो आईसीएच गाइडलाइन फॉलो किया है नहीं किया है वो सब देख के प्रोटोकॉल जो है आता है कोई भी स्टडी के लिए. तो द प्रोटोकॉल नीड टू बी अ सेफ. Okay, so the next why protocol is the necessary. So the quality wise, so why protocol is necessary quality wise. A well written and a complete protocol is essential for a high quality study. Many clinical studies have problems with incompleteness, ambiguity, and the inconsistency. So many of these problems are avoidable by careful planning during a protocol writing process. So we'll see who is responsible to write a protocol in next slide. So writing a detailed research protocol will require you to make decision on the aims and the objective of the study, what measurement need to be made, the group of the patient to be studied, and how the data will be analyzed. So this is all about the quality of the protocol. Time spent on the writing a detailed protocol will avoid problem during a study and will make publishing the result easier. So yes, protocol require a lot of time. Okay, so medical writing team and the medical monitor is responsible to develop this particular document. Sorry, Okay. फ्रेंड्स मैम. आप मैम yes. वॉइस क्लियर नहीं आ रही है मैम. हाँ. वॉइस क्लियर नहीं आ रही है. Okay. So everyone face this problem. Yes. Yes, ma'am. Okay. So I joined from mobile. My laptop voice is not working. Okay. Now clear. Yes. Okay. Yes, ma'am. Are you there? Ma'am, you are not audible.
With students, there is technical issue.
Yes, ma'am. Are you there? Hello, am I audible? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Okay, sorry for the disturbance. Okay, so start. Okay, so um, we already see quality and publishing. Okay, so the approval wise, we already see this particular part who approve this particular protocol. So yes, then the next step is who is responsible for protocol development. So the medical expert is a major contributor in the producing a protocol. So the medical monitor, principal investigator, and the medical writer is responsible for the protocol development. So ये question आपको आ सकता है कि who is responsible to develop a protocol. So the medical expert is the medical monitor. So medical monitor is always a doctor. Okay. So the principal investigator and the medical writer.
Okay, so if the company is sponsor company, then all other study members are also give their input on a protocol. Okay, so the protocol circulate on in the organization. So the lead data manager, and the manager, other team member also give their input on a protocol. So it depends on the company, the sponsor company and the third party company. So yes, then the elements of the protocol. So these are some important elements of the protocol. So title page, schema, schematic diagram, title of the content, objective, primary objective, secondary, tertiary, background, rational, eligibility criteria means the inclusion exclusion criteria and the treatment plan or the study design. So these are the important elements of the protocol, so which you need to review. Okay, so we'll see the how protocol looks like. So this is a sample protocol. So the sponsor is the AbbVie. Okay, then this is the title. So टाइटल से हमें पता चल जाता है कि स्टडी का थेराप्यूटिक एरिया कौन सा है, ड्रग कौन सा है, फेज कौन सा है, रैंडमाइज है, नॉन रैंडमाइज है, प्लेसिबो कंट्रोल है. सो ये सब हमें टाइटल से पता चल जाएगा. सो दिस पर्टिकुलर title contain a phase 3 randomized placebo control trial of the carboplatin and the paclitaxel with or without PARP inhibitor veliparib. So this is a drug, main drug. So this is a title in short. So in detail में आपको जाने की जरूरत नहीं, ड्रग वगैरह आपको उससे कुछ लेना देना है, जस्ट टाइटल. So टाइटल से हमें पता चल जाता है कि फेज कौन सा है, प्लेसिबो कंट्रोल है, ब्लाइंडेड है, डबल ब्लाइंडेड है, ड्रग कौन सा है, थेराप्यूटिक एरिया, अगर कॉम्बिनेशन ड्रग है तो कॉम्बिनेशन ड्रग कौन सा है, एंड द डिसीज. सो दिस स्टडी इज रिलेटेड टू द ब्रेस्ट कैंसर एंड दीज आर द अमेंडमेंट. सो अमेंडमेंट्स में जब भी उसमें चेंजेस होते जाएंगे प्रोटोकॉल में, तब उसको ये जो है अमेंडमेंट 1 2 3 जितने बार अमेंडमेंट होगा, जितनी बार चेंजेस होंगे, जितनी बार डिलीशन होगा, एडिशन होगा, उतनी बार उसका अमेंडमेंट होगा. दिस इज द प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन. सो दिस इज द मेन ड्रग वेलिपैरिब. दिस इज द डेट, पेज, दिस इज द टाइटल एंड द स्पॉन्सर. सो स्पॉन्सर इज द AbbVie. सो दिस इज द टाइटल पेज. तो टाइटल से हमें पता चल जाएगा कि स्टडी क्या है. These are the amendments. Amendments means क्या क्या चेंज हुआ था, कब चेंज हुआ था, क्यों चेंज हुआ था, विथ रीजन. तो ये सब अमेंडमेंट में आ जाएगा. These are the amendments. And then start with the synopsis. So synopsis में पूरा जो स्टडी है हमारा इन शॉर्ट उन्होंने एक्सप्लेन किया रहता है इन synopsis. So the sponsor, the name of the drug, then the protocol number, phase of the drug, ingredient, name of active ingredient, date of the protocol, synopsis. So this is the title, objective, study sites. So multi-center sites है approximately 200 sites, मतलब 200 hospitals involved थे इसमें. Okay, the study population. So यहाँ पे inclusion exclusion criteria दिया है कि 18 years के अब होने चाहिए, बिल होने चाहिए. So these are the criteria. Study population means कौन से subject enroll होने वाले हैं इसमें. Yes, so the number subject कितने enroll होने वाले, approximately 500. So it depend on the study. 500 से ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है. Okay, so this is a cancer का study. Then the methodology. So उसका methodology क्या है, in short यहाँ पे explain किया है. तो आपको देखना है कि प्रोटोकॉल कैसे दिखता है, ये स्टडी में क्या था क्या नहीं है, ये आपको नहीं देखना. बस इसमें जो इम्पोर्टेंट सेक्शन थे जो हमने पीपीटी में देखे कि कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शंस होते हैं, टाइटल पेज, स्कीमेटिक डायग्राम, टाइटल, टेबल ऑफ कंटेंट, ऑब्जेक्टिव, ये सब हमारा प्रोजेक्ट प्रोटोकॉल में कवर हो जाएगा. सो दिस इज द मेथोडोलॉजी. मीन्स ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, वो ट्यूमर पे कैसे काम करेगा, कैसे रेजिस्ट करेगा ट्यूमर को, रेजिस्ट क्या है, ये सब इंफॉर्मेशन मेथोडोलॉजी में यहाँ पे दिया रहेगा. सो द इम्पोर्टेंट पार्ट इज द इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया. सो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट सेक्शन इनटू द प्रोटोकॉल. सो बहुत बार पूछा जाता है कि व्हाट आर ऑल द इम्पोर्टेंट सेक्शंस इनटू द प्रोटोकॉल. सो yes, title page, inclusion exclusion criteria, schematic diagram or the assessment of the study, primary objective, secondary objective, end points. So these are some important sections.
ओके, सो द इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया, सो इंक्लूड होने के लिए क्या क्राइटेरिया चाहिए और एक्सक्लूड होने के लिए क्या क्राइटेरिया चाहिए स्टडी में. So this is explained into the inclusion exclusion criteria. Okay, inclusion criteria, and these are the exclusion criteria. This is the drug information, product information. तो कितना डोज देना है, मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, ओरल है, दीज आर द कॉम्बिनेशन ड्रग. ये जो है कॉम्बिनेशन ड्रग है. यहाँ पे कितने ग्रुप है, सिंगल वेलिपैरिप देना है, उसके बाद कार्बोप्लाटिन देंगे, पैक्ली टैक्सेल देंगे और वेलिपैरिप विथ और प्लेसिबो. एक ग्रुप को एक तो वेलिपैरिप मिलेगा, एक तो प्लेसिबो मिलेगा. सो वी ऑलरेडी डिस्कस व्हाट इज प्लेसिबो, व्हाट इज एक्टिव ड्रग. सो यस, so these are the groups or these are the dose. अभी ये इसका मोड ऑफ एक्शन इंट्रावेनस है, ओरल है, कितना देना है, कितने साइकिल्स तक देना है, वो सब यहाँ पे मेंशन है. इन इंटरिम एनालिसिस मीन्स इन बिटवीन अगर स्टडी में हमें क्लीनिंग चाहिए, सो वो हमें सपोज अगर 500 पेशेंट इनरोल है, सो 250 पेशेंट होने के बाद जो 250 पेशेंट का पूरा डेटा हमें क्लीन करके वो पर्टिकुलर डेटा हम फ्रीज कर देते हैं. तो वो पर्टिकुलर डेटा अभी क्लीन हो गया है, तो उसको इंटरिम एनालिसिस बोलते हैं. इंटरिम एनालिसिस करके हम वो डेटा क्लीन करके हम वो फ्रीज करते थे. तो लॉक के टाइम पे हमें इतना ज्यादा मीन्स 500 पेशेंट क्लीन करने की जरूरत नहीं, हमें ओनली 250 करना है. 250 ऑलरेडी वी डन. सो दैट इज वाई वी परफॉर्म दिस पर्टिकुलर इंटरिम एनालिसिस. सो इट डिपेंड ऑन द स्टडी टू स्टडी. सो प्रोटोकॉल में ऑलरेडी दिया रहता है कि कितने इंटरिम एनालिसिस एक्सपेक्टेड है ये पर्टिकुलर स्टडी में. सो इंटरिम एनालिसिस, these are the criteria for evaluation. So the abbreviation, short form, long form, table of content, and then यहाँ से in detail हमारा प्रोटोकॉल स्टार्ट हो गया. सो द इंट्रोडक्शन यहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर के रिलेटेड पूरा इंफॉर्मेशन दिया रहेगा कि क्या है, कब हुआ, कब पहला ब्रेस्ट कैंसर राइज हुआ, उसके टाइप्स क्या है, वो इन डिटेल ब्रेस्ट कैंसर के रिलेटेड पूरा का पूरा इनहिबिटर एंड ऑल वो सब इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है. उसके बाद ये जो ड्रग है वो कैसे काम करेंगे ब्रेस्ट कैंसर पे, वो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है. देन आर ड्रग, हमारा ड्रग जो है स्टडी का वो कैसे काम करेगा ब्रेस्ट कैंसर पे, वो यहाँ पे दिया है. देन प्री क्लिनिकल एक्सपीरियंस. तो प्री क्लिनिकल वी ऑलरेडी डिस्कस व्हाट इज द प्री क्लिनिकल. सो एनिमल्स पे जब ये ड्रग दिया गया तो वहाँ पे क्या रिजल्ट आया, यहाँ पे इन शॉर्ट वो एक्सप्लेन किया है प्री क्लिनिकल एक्सपीरियंस. दिस इज द फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोडायनामिक एक्टिविटी, टॉक्सिकोलॉजी, ये सब जो है वी ऑलरेडी डिस्कस. जो प्री क्लिनिकल स्टडीज करते हैं वहाँ पे ये फार्माकोकाइनेटिक, डायनामिक, टॉक्सिकोलॉजिकल जो इफेक्ट है वो सब हम वो यहाँ पे चेक करते हैं. सो दे एक्सप्लेन इन शॉर्ट, इन विट्रो, इन विवो. देन द क्लिनिकल एक्सपीरियंस. तो ड्रग कैसे देने वाले, कैसे कॉम्बिनेशन करने वाले, कितना देने वाले, कितने साइकिल्स तक देने वाले, दिन में कितने बार देने, फ्रीक्वेंसी एंड ऑल दे मेंशन ओवर हियर. देन द स्टडी रैशनल. रैशनल क्या है ये स्टडी का, बेनिफिट्स एंड रिस्क. सो द प्रोटोकॉल इज अ वेरी लेंथी डॉक्यूमेंट. ये सब रिव्यू करना होता है स्टार्ट में. ओके, द स्टडी ऑब्जेक्टिव, दिस ऑल्सो इम्पोर्टेंट सेक्शन. स्टडी ऑब्जेक्टिव, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या है. देन इन्वेस्टिगेशनल प्लान. तो ये इन्वेस्टिगेशनल प्लान जो है वो लास्ट में स्टैटिस्टिशियन प्रिपेयर करते हैं इन्वेस्टिगेशनल प्लान. सो ओवरऑल स्टडी डिजाइन एंड प्लान. तो स्टडी का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया हुआ है. तो यहाँ पे दिया है ट्रीटमेंट स्कीमा, ये जो साइकिल वाइज वेरिपैरिक, प्लेसिबो कब देने वाले हैं, ट्वाइस अ डे, ये सब इंफॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन है. तो दिस इज द थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन. इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया अभी वो हमें सिनॉप्सिस में देखा, वो इन शॉर्ट था. अभी यहाँ पे इन डिटेल इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया यहाँ पे उन्होंने दिया है इन डिटेल. क्या क्या क्राइटेरिया चाहिए इंक्लूड होने के लिए, एक्सक्लूड होने के लिए. कॉन्कॉमिटेंट थेरेपी, कॉन्कॉमिटेंट थेरेपी के रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे दिया है.
Then study procedure, informed consent, मेडिकल हिस्ट्री। तो ये अभी फॉर्म है, ये फॉर्म देख के हमें सीआरएफ डिजाइन करना होता है। ईसीजी है, वाइटल साइंस है। अभी यहाँ पे वाइटल साइंस कौन से यूज करने वाले हैं, हार्ट रेट है, डायस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर। तो यहाँ पे देख के हमें डिजाइन करना होता है। प्रेगनेंसी टेस्ट है, आप अभी कोई स्टडी में प्रेगनेंसी टेस्ट नहीं होता, कोई स्टडी में होता है। सो इट डिपेंड ऑन द स्टडी टू स्टडी। सो प्रेगनेंसी टेस्ट इंक्लूड करना है सीआरएफ में या नहीं करना है, ये हमें यहाँ से पता चलेगा। अगर नहीं है तो वी डायरेक्टली कॉपी पेस्ट दिस पर्टिकुलर फॉर्म्स इनटू द अनदर स्टडी। बट अगर ये स्टडी में प्रेगनेंसी टेस्ट है ही नहीं तो क्यों इंक्लूड करना है? सो यहाँ पे देखना है प्रोटोकॉल में हमें। दैट इज वाई वी नीड टू रिव्यू प्रोटोकॉल थरली। प्रेगनेंसी टेस्ट है या नहीं है, उसमें भी ब्लड, उसमें भी सीरम का प्रेगनेंसी टेस्ट है, ब्लड का है, वो भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पे वो मेंशन रहेगा यहाँ पे, और सीरम प्रेगनेंसी टेस्ट है, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट है। तो कोई स्टडी में सिर्फ सीरम होता है, कोई स्टडी में सिर्फ यूरिन होता है, कोई स्टडी में बोथ होता है। तो ये हमें इंक्लूड करना होता है सीआरएफ में। लैब टेस्ट, अभी यहाँ पे लैब टेस्ट कौन से है, वहां पे यहाँ पे लैब टेस्ट कौन से है, यूरिन है, सीरम है, ब्लड है, ये डिपेंड करता है अभी। या ये डेटा पढ़ना पड़ेगा, तब जाके हमें समझेगा कि ब्लड का है, सीरम का है, यूरिन का है, और तीनों है। लैब टेस्ट कौन से लैब टेस्ट होने वाले हैं, हेमोक्रिट है, हेमोग्लोबिन, ये पूरे के पूरे टेस्ट इंक्लूड हो गए। दिस इज theoretical information, tumor related information. So this is a ECG related PROs. So the patient reported outcomes. So the PROs as a question है। So PRO reconciliation भी रहता है बहुत बार स्टडी में। So PRO reconciliation means पेशेंट को एक टैब दिया जाता है और उनके मोबाइल में एक एप्लीकेशन इनरोल किया जाता है। उसमें कुछ क्वेश्चन रहते हैं। तो उस क्वेश्चन का उनको आंसर करना पड़ता है डेली, कि ये पर्टिकुलर ड्रग है, वो लिया नहीं लिया, सुबह लिया, दोपहर में लिया, शाम को लिया। तो वो क्वेश्चन उनको फिल करना होता है डेली। तो उसका भी रिकंसिलेशन होता है, उसका रिकंसिलेशन करना पड़ता है स्टडी में। तो जैसे हम ऐसे रिकंसिलेशन करते हैं, लैब रिकंसिलेशन करते हैं, वैसे पीआरओ का रिकंसिलेशन भी होता है। जो भी पेशेंट क्वेश्चन जो भी फील करते हैं, जो भी आंसर करते हैं, उसका। रैंडमाइजेशन क्राइटेरिया, रैंडमाइजेशन के लिए कौन सी टेक्निक यूज करिए, IWRS, IVRS, IRT। तो ये यहाँ पे मेंशन रहेगा। ब्लाइंडेड स्टडी ट्रीटमेंट, ब्लाइंडेड है, डबल ब्लाइंडेड है, अनब्लाइंडेड स्टडी। अनब्लाइंड कब होगा स्टडी हमारा? एट द एंड ऑफ द स्टडी होगा, इन बिटवीन होगा। बायोमार्कर, तो बायोमार्कर का भी रिकंसिलेशन होता है। ये भी सैंपल्स जो है वो हम थर्ड पार्टी को भेजते हैं, बायोमार्कर सैंपल। So this is the theoretical information.
Ma'am, you are not audible, ma'am. Ma'am, you are not audible. Yes, you are not audible. Yogita ma'am, you are not audible. Today, ma'am joined from mobile actually. That's why the issues is there. Yes, ma'am, are you there? Hello, am I audible now? Yes. Yeah. तो कहाँ तक आपको मतलब कहाँ तक आपको आवाज आ रहा था? आप प्रोटोकॉल स्ट्रक्चर रिजिड स्ट्रक्चर आप एक्सप्लेन कर रहे थे। यही ना स्कीमा जो चार्ट था वही ना? हाँ वही। हाँ ठीक है, ओके। स्क्रीन नहीं विजिबल नहीं है स्क्रीन। स्क्रीन इज नॉट विजिबल। ओके दिस चार्ट। सो समझा आपको ये चार्ट क्या है, कैसे काम करेगा सीआरएफ डिजाइन में? No, ma'am. Okay, so these are all the forms. हाँ, तो we already discussed CRF case report form. So case report form में कुछ फॉर्म्स थे स्टडी स्पेसिफिक थे, कुछ जनरल फॉर्म्स थे। तो यहाँ पे जनरल फॉर्म मतलब इन्फॉर्म कंसेंट है, ईसीजी है, वाइटल साइंस है, प्रेगनेंसी टेस्ट। सो इट डिपेंड ऑन द स्टडी। तो स्टडी पर प्रेगनेंसी टेस्ट भी बहुत सारे स्टडी में कॉमन ही रहता है। जो स्टडी सिर्फ मेन रिलेटेड है वहाँ पे ओनली ये फॉर्म नहीं रहेगा, जहाँ पे विमेंस इनरोल्ड है वहाँ पे प्रेगनेंसी टेस्ट रहेगा। सो दिस इज ऑल्सो कॉमन फॉर्म। ओके, सो फिजिकल एग्जामिनेशन, रैंडमाइजेशन, सो दीज आर सम कॉमन फॉर्म। सो ये हम डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करेंगे दूसरे स्टडी से।
and others form we need to create by using our logic. So these are the visits. ये विजिट है और ये है फॉर्म्स. जहाँ पे क्रॉस है वहाँ वो विजिट में ये पर्टिकुलर फॉर्म्स रहेंगे, जहाँ पे क्रॉस नहीं है वहाँ पे वो फॉर्म्स नहीं रहेंगे. अभी साइकिल 1 day 1 में यहाँ पे ओनली ईसीजी है, वाइटल साइंस एंड हिमेटोलॉजी. बाकी जो है एई असेसमेंट, बाकी जो है ये विजिट में जरूरत नहीं है पेशेंट की. वो जो फॉर्म्स है वो डायरेक्टली साइकिल 1 जो है फिजिकल एग्जामिनेशन डायरेक्ट साइकिल 1 day 15 में ही होगा वो पर्टिकुलर पेशेंट का. तो यहाँ पे पूरा चार्ट दिया है कि पेशेंट कब आएगा विजिट के लिए, कौन से साइकिल में आएगा, कब ड्रग लेगा, कौन सा फॉर्म करेगा, कब वाइटल साइंस उसका होगा. वाइटल साइंस मीन्स उसका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट कितना है, टेम्परेचर कितना है, ये सारी इंफॉर्मेशन होती है अपने वाइटल साइंस में. सो इट डिपेंड ऑन द स्टडी टू स्टडी. सो दिस इज द चार्ट स्टडी एक्टिविटी. दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट इनटू द प्रोटोकॉल. तो ये आपको अगर कोई इम्पोर्टेंट पार्ट अगर प्रोटोकॉल की पूछे तो ये आपको बताना ही है. ये यूज करके ही कोई भी सीआरएफ हमें डिजाइन करना होता है. फिर अभी यहाँ पे फॉर्म्स मिल जाएंगे. सो अभी इन डिटेल अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमने ऊपर देखा फिजिकल एग्जामिनेशन, ईसीजी, वाइटल साइंस, कौन से वाइटल साइंस इन्वॉल्व है ये पर्टिकुलर स्टडी में. अभी प्रेगनेंसी टेस्ट है तो उसमें सीरम है, यूरिन है, वो भी हमें ऊपर जाके देखना पड़ेगा. अभी यहाँ पे हमें पता चलेगा कौन सी कितनी साइकिल्स है, कौन से फॉर्म्स है और कौन से साइकिल में कौन से फॉर्म्स होने वाले हैं. यहाँ से हमें पता चलेगा. इन डिटेल इंफॉर्मेशन हमें ऊपर से मिल जाएगी. अभी इन्फॉर्म कंसर्न का जो है इंफॉर्मेशन जो है वो डेमोग्राफिक्स में कवर हो जाता है. एक क्वेश्चनर रहता है, ओनली एक क्वेश्चनर होता है. ओके, सो पेशेंट साइन दिस पर्टिकुलर इन्फॉर्म कंसर्न यस और नो. ओके, सो ये जो है डेमोग्राफिक्स में आ जाता है. सो दिस इज द एक्टिविटी, स्टडी एक्टिविटी. तो ये जो है इम्पोर्टेंट सेक्शन एवरी प्रोटोकॉल में रहता ही है. तो ये हमें रेडीमेड मिल जाता है. अभी यहाँ पे ये जो रेज यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दिया है वो यहाँ पे मिल जाएगा. ए का मीनिंग क्या है, बी का मीनिंग क्या है, सी का मीनिंग है. बट इन डिटेल में आपको इतना जाना नहीं है. बट अगर आपको है क्वेश्चन है कि ये क्या है, सो एक्सप्रेस टू डी आई क्या है, तो यहाँ पे ये पूरा इन डिटेल इन्फॉर्मेशन दिया है कि उसका मीनिंग क्या है. तो यस, ये जो है so this is the information about the protocol. So this is the detailed protocol, then the reference and all. अनब्लाइंडिंग जो है वो एट द एंड होता है स्टडी का. उसको BDRM बोलता है, ब्लाइंडेड स्टडी मीटिंग बोलते हैं, ब्लाइंडेड डेटा मीटिंग, रिजल्ट मीटिंग. सो BDRM, सो वो स्पॉन्सर कंपनी में ही होता है. BDRM थर्ड पार्टी में नहीं होता. तो वो जो ब्लाइंडेड डेटा है वो अनब्लाइंड करते हैं उस टाइम पे. तो इतना इन डिटेल में भी जाने की जरूरत नहीं है. बस आपको इम्पोर्टेंट सेक्शन समझा प्रोटोकॉल में जो कौन से इम्पोर्टेंट सेक्शन होते हैं. टाइटल पेज, ड्रग इंफॉर्मेशन, सिनॉप्सिस में जो है इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया, स्टडी. यस, ब्लाइंडेड और अनब्लाइंडेड का एक बार बताओगे क्या? यस, ब्लाइंडेड एंड अनब्लाइंडेड. ओके, सो ब्लाइंडेड एंड डबल ब्लाइंडेड होता है. ब्लाइंडेड डेटा अनब्लाइंड होता है एट द एंड ऑफ द स्टडी. सो द ब्लाइंडेड मींस अभी दो लोग होते हैं, जो ड्रग लेने वाला होता है और दूसरा जो होता है वो ड्रग देने वाला होता है. सो ब्लाइंडेड मींस जो ड्रग लेने वाला होता है मींस पेशेंट को पता नहीं होता कि उसको कौन सा ड्रग मिलने वाला है. जो देने वाला मींस डॉक्टर जो होता है उसको पता होता है कि कौन सा ड्रग पेशेंट को दे रहे हैं, उसको बोलते हैं ब्लाइंडेड. इन डबल ब्लाइंडेड बोथ जो पेशेंट है और डॉक्टर है दोनों को नहीं पता होता है कि ये पेशेंट को कौन सा ड्रग दिया जा रहा है. So this is a double blinded and double blinded. Okay, understood. Yes, understood? Ma'am, Yes. please go it on English, ma'am. It's entirely it's going on Hindi. Huh? Can you go it on English, please? It's full of Hindi. It's going on. I can't able to understand what you're speaking. Okay, so blinded and double blinded. So administrator and the investigator. So the administrator and the investigator. Administrator doesn't know what he is injecting into the body. Only the investigator knows. This is the blinded. In double blinded, both
unaware about the treatment, what is he is giving to the treatment to the patient. Okay, so this is a double blinded and double blinded. Got it? Yes, ma'am. Okay, any doubt in protocol? So what you need to know in protocol, what is the protocol and what are the important section into the protocol and who is responsible to develop a protocol. That's it. Yes, any doubt in protocol, what is the protocol? So can anyone tell me the important sections into the protocol? In protocol, important section is rigid structure and inclusion exclusion criteria. Synopsis, title page. Start from the title page. Start from the title page and then Title below. page, Yes. objective, study design, Hmm. synopsis, Mm-hmm. structure, Mm-hmm. inclusion exclusion criteria. Mm-hmm. I Mm-hmm. think that is the most important thing we have to check. Mm-hmm. Yes. Endpoint, primary endpoint, secondary endpoint, primary objective, secondary objective, inclusion exclusion criteria means the eligibility. Okay. Yes, any doubt? So this is the protocol. So this is almost 236 pages. Okay. So this protocol you need to review in detail. Okay. So before start study. So no need to review all the protocols. So there are some information, theoretical information as well. So you need to review and go through to the important sections only. So the mechanism of action. So drug mechanism action, and what drug involves, so how we, the frequency of the drug, dose of the drug. So all this information you need to know. Yes, any doubt? If no doubt, we'll move to the next topic. मैम Uh, मतलब इससे yes. रिलेटेड क्या क्वेश्चंस आते हैं बेसिकली? Yes, protocol. So in protocol, what is a protocol? Then what are all the important sections into the protocol and who is responsible to develop a protocol? ओके, सो इसमें तो आपको इतना ये पता ही कि कौन से कॉमन फॉर्म्स है, कौन से स्टडी स्पेसिफिक फॉर्म्स है. आपको स्टडी स्पेसिफिक फॉर्म जो है प्रोटोकॉल आपको मिलने के बाद ही आप बोल सकते, बट जो जनरल फॉर्म्स है वो आपको पता होना चाहिए कि जनरल फॉर्म्स कौन से होते हैं. सो जनरल फॉर्म्स मतलब जो डेमोग्राफिक्स है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीन्स इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया, मेडिकल हिस्ट्री है, वाइटल साइंस है, फिजिकल एग्जामिनेशन, डेथ फॉर्म, स्टडी कंप्लीशन फॉर्म. तो ये जो फॉर्म्स है वो कोई भी स्टडी में रहेगा ही रहेगा, डेमोग्राफिक्स रहेगा ही रहेगा. तो उसमें पेशेंट का इन्फॉर्मेशन रहता है, मेडिकल हिस्ट्री रहेगा ही, कॉन्कमिटेंट मेडिकेशन रहेगा ही. तो अगर किसी ने पूछा कि कॉमन फॉर्म्स कौन से, तो आपको वो भी पता होना चाहिए कि कॉमन फॉर्म्स कौन से है. तो इतना आपको बता, एज अ फ्रेशर आपको इन डिटेल कोई पूछेगा नहीं. एज अ फ्रेशर भी एक्सपीरियंस जो है कैंडिडेट को भी इतना ही पूछा जाता है कि प्रोटोकॉल में इंपॉर्टेंट सेक्शंस कौन से है. Have you reviewed any protocol? If you said yes, then they ask you the important sections. Yes, समझा? यस मैम समझा. Yes. Okay, so no doubt, then we'll move to the next topic, that is the data management plan. So the DMP. So this particular document also we need to create into the startup phase, okay, simultaneously. So we first document is the protocol. Once we review protocol, then the next document we need to create is the edit check specification document, and simultaneously the first CRF, then edit check document. Okay. So simultaneously we need to create some documents. Okay, some documents means the data management plan, ECRO specification guideline, SI document and the vendor document. So these all documents also we need to create. So उसका कुछ flow नहीं है कि ये उसके बाद ही बनेगा, उसके पहले ही बनेगा. बट जो प्रोटोकॉल है वो मिलने के बाद पहले हमें क्या करना है, CRF डिजाइन, उसके बाद एडिट चेक स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट.
Then simultaneously we need to create this particular documents, the DMP, ECCG, and the SA document. So now we'll discuss data management plan. Okay. So yes, my screen is visible. Yes, ma'am. Okay. So, in short, data management plan. So, as the name said, the data management plan. So, plan. So, we need to plan the study. So, start to end with the tentative dates. Okay. So, the plan means when. When there is an interim analysis, we need to perform. Then, what is when we share the essay reconciliation to the sponsor, when we perform conduct matrix, when we need to share the CPT, what all members enroll into the study, when अगर कोई आता है स्टडी में तो उसका वो डीएमपी में नाम ऐड करना पड़ता है, अगर कोई जाता है उसका एक्सेस रिवोक किया, yes, no, so all the information present into the data management plan, all the vendor information, the frequency of the activity, so all information contained into the data management plan. So the name says a plan, so we need to plan all the studies to start to end with the tentative date. अभी आप बोलोगे कि प्लान कैसे करना है, स्टार्टअप में ही हम क्लोज आउट का प्लान कैसे करेंगे. So with the tentative date, so we need to catch this particular date. ओके सो अगर हमने 1 मंथ के बाद इंटरिम प्लान किया है तो टेंटेटिवली हमें वो डेट हमें कैप्चर करना है, कैच करना है. ऐसे नहीं कि हाँ वो डेट पे ही होना चाहिए, बट टेंटेटिव डेट हमें ऐड करना होता है डेटा मैनेजमेंट प्लान में. सो वी नीड टू प्लान ऑल द एक्टिविटी ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टडी इनटू द डेटा मैनेजमेंट प्लान. और अदर देन प्लान, सो कोई ये पर्टिकुलर स्टडी में कौन कौन इनरोल है, कितने डेटा मैनेजर्स है, हाउ मेनी डेटा मैनेजर्स आर देयर, one data manager, uska naam with the contact details, then the vendor information, how many vendor enroll into this particular study, vendor information, vendor contact details, so all information present into the data management plan. Okay, so scientifically, the data management plan describes the data that will be acquired or produced during research, how the data will manage, describe, and store, what standard you will use, and how the data will be handled and protected during and after the completion of the project. So start to end, so till archival, so all information present into the data management plan. The data management plan describe the database design, data entry, and the data tracking guideline, quality control measure, essay reconciliation guideline, discrepancy management, data transfer extraction, database locking guidelines, so all information present into the data management plan. So what application we are using into that particular trial. So for CRF design, we are using NDesign. So we need to mention this particular application into the data management plan with the version details, what database we are using. If we are using multiple databases, we need to add this particular information into the data management plan. Madam, you are in mute. Hello. Am I audible? Ma'am, you are not audible, ma'am. Ma'am, you are not audible. Hello, ma'am. Hello. Am I audible?
Ma'am, not audible. Yogita ma'am, you are not audible. Yes, now audible? Yes, audible. Okay. Okay, so this is a protocol title. So from where we copy paste this protocol title? Yes, from title page. Yes, from from title. protocol. So yes, yes. So this is the template, ready-made template of the data management plan. So we directly copy paste information over here. So the title page. So we directly copy paste title from the protocol, then protocol version and date. So yes, this information also we directly copy paste from the protocol, then sponsor, yes, from protocol. So version history. So version history means whenever we need to update this particular data management plan, we need to update a version history. So this is a live document. So of course we need to update this particular document as per any deletion or the addition of the data. So yes, so this is the version control document. So the input document we are using to create this particular data management plan. So what document we required? So the approved protocol, case report form, study timeline, then investigator and the site detail and the vendor detail. So these are the input document we required to create data management plan. So ये information कहाँ कहाँ कैसे कैसे use होगा? So we'll see into the data management plan. Okay, so yes, these information we directly copy paste from the protocol approval page. So who is responsible to prepare this particular document, who is review and who is approve. So it depend on the organization to organization. So कोई document कुछ organization में data manager is responsible to create this particular document, and some organization lead data manager is responsible to create this particular document. So it depend on the organization to organization. So approved. So we need a approved copy. So ये particular document startup page में approve होना चाहिए. Okay. So yes. So this is the approval page. Then the table of content. So this also we need to update as per study requirement. Then the purpose. So this purpose is also we directly take from the protocol. So purpose is also mentioned into the protocol. Study details same from the protocol. Title is present into protocol. Endpoint objectives are also present into the protocol. Design also present into the protocol. So this therapeutic information we directly take from the protocol. Copy paste from the protocol. Endpoints, abbreviations, then the roles and the responsibilities. So if the organization is same, then we no need to change this particular information. So the responsibility of the
lead data manager, group lead, so this is a responsibility, DMPL, so this is a responsibility, so this responsibility तो कभी change नहीं होगा, जो DMGL का responsibility है वो वही रहेगा, so this information we no need to change. Okay, then the contact list, so whoever enrolled into that particular study, so all information present over here. SOPs कौन से रिव्यू करना है, कौन से नहीं, वो इंफॉर्मेशन भी डेटा मैनेजमेंट टीम में होगा. सो दीज आर द systems, so these are the application used into the trial. So this is the database, Oracle Clinical, and then the TMS, so version number, so this we need to update into the study data management plan. Okay, then the project timeline, so timeline we can directly take from the proposed study timeline document. So this is a separate document, study timeline document. So we directly copy paste this information from the study timeline document. So these are the tentative dates. So database setup कब होगा, data entry कब start होगा, last ECRF कब होगा, ऐसे reconciliation कब होगा. So these are the tentative dates. So we need to achieve this particular date. Okay, so then the project communication, issue escalation, status report. Okay, so this information is also same in all the study. Then the status report, so this depend on the study to study. So which status report we need to share with the sponsor or the internal team. So the missing page report, so these are some reports we directly pull from the database. Okay, तो द मिसिंग पेज रिपोर्ट, कब फ्रीक्वेंसी मीन्स कब वो रिपोर्ट भेजना है, देन द ईमेल आईडी, डिलीवर टू किसे डिलीवर करना है, ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है. सो द स्टेटस रिपोर्ट, स्टेटस किसको देना है, कब देना है, वाया कैसे देना है, ईमेल देना है या कोई एप्लीकेशन थ्रू देना है, और हमें विवा वॉल्ट पे रखना है. सो दिस इंफॉर्मेशन प्रेजेंट हुआ हियर. सो वी नीड टू अपडेट दिस इंफॉर्मेशन. ओके, study to study, so ये हमें update करना होगा. So some tabs we need to update and some information we need to copy paste from the protocol. Then the vendor management, so these are the information of the vendor. So vendor कौन से enrolled है यहाँ पे वो mention करना पड़ेगा. So the Cyformix is the vendor for what safety, for the SAE data. So who is the primary contact detail, so he is the contact person and the contact detail. So this is the information. Project training, so which training we need to perform this particular study. So project training, then the task matrix, so these are the task matrix for what all activities present into this particular study. So CRF development, so who is performing this activity, जो स्पॉन्सर कंपनी परफॉर्म करने वाला है या वेंडर परफॉर्म करने वाला है, मीन्स उन्होंने किसी थर्ड पार्टी को बिजनेस दिया है. सो इट डिपेंड, it need to mention over here. So CRF, they are performing into the company only. ECRF guideline, they are performing into the company only. So this depend on these are the activities. Okay, so set up activities, database कौन डिजाइन करेगा, UAT कौन करेगा. So this all information present over here. So this is the electronic lab data handling. So this is not applicable for this study. That is why they tick over here. So this is not applicable for this study. So that is why they tick over here. So this is the section we need to update as per study requirement. Okay. So this information we directly take from the protocol. Then the modules means what all forms are enrolled into the study. So this information we directly take from the protocol. So वो जो last में हमने section देखा था, वो जो table देखा था, so yes, from that table we directly take this particular information. कौन से forms, कौन से module enroll है ये particular study में. So the subject visit, informed consent, MHA, medical history, vital signs, physical examination, pregnancy test, ECCG, duplicate ECG. So these all information we directly take from the protocol. Module names, the randomization process. So yes, this information also present into the protocol. So this for eCRF design. So for CRF design, which application we are using, the Adobe InDesign and the version. So we need to mention over here. So what all application we are using
Am I audible, right? Yes? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Okay. So yes, this is the UAT template. So we need to update some sections in this particular UAT, in particular data management plan by using these input documents, approved protocol, this is CRA, proposal timeline, investment plan, vendor details. So yes, accordingly, using this information, we need to update tabs. So this is the common information. No need to touch. Okay. So this is the database related information. If you are using Rave database, then Rave information is already present over here. So no need to touch coding information, what coding dictionaries we are using and all this ऐसे related information. तो अगर कोडिंग जो है कोडिंग का कोई कुछ चेंज होगा डिक्शनरी वर्जन चेंज हुआ है कुछ भी चेंज हो गया है तो दिस पर्टिकुलर टेम्पलेट वी नीड टू अप वर्जन मीन्स उसका जो हिस्ट्री है उसका जो अपवर्जनिंग होगा अगर 1.1 डेटा मैनेजमेंट का वर्जन हिस्ट्री 1.1 है तो 1.2 हो जाएगा अपवर्जन हो जाएगा तो ये दिस इज अ वर्जन कंट्रोल्ड डॉक्यूमेंट सो जब भी कोई भी अपडेट होगा वैसे वैसे वो पर्टिकुलर डेटा मैनेजमेंट प्लान जो है अपवर्जन होते जाएगा उसका वर्जन चेंज होते जाएगा so that is why we called this data management plan is a live document तो कोई अगर ऑर्गेनाइजेशन में आया कोई गया तो उसका जो एक्सेस है वो रिवोक करना किया नहीं किया तो वो टिक होना है डेटा मैनेजमेंट प्लान से उसका नाम जो है निकालना है तो ये जो है हमें करना है परफॉर्म करना है इन ongoing basis so yes data management plan so yes any doubt in data management plan so what is the data management plan and how to create this particular data management plan so the purpose of the data management plan okay so the name itself said a plan so we need to plan a study at the start of the study startup में ही हमें plan करना है study का so yes any doubt in data management plan yes no No, madam. okay yes any doubt in protocol and the data management plan yes any doubt समझा सब okay so tell me the flow of protocol yes tell me Title, yes objective, study design. mm-hmm. Title, objective, Mm-hmm. study design, procedure, then visit schedule, then Mm-hmm. implementation Synopsis. criteria, synopsis, Mm-hmm. and Okay, so first is primary what is and the purpose? primary Mhm. endpoint. Yes, so these are the important sections. So, but the first is the, what is the protocol? Protocol is the detailed plan of the guideline that the procedure for conducting particular activities. Yes, and who is responsible to develop this document? Doctor, medical expert. Yes. Yes, medical expertise, medical monitor, medical writer, and the principal investigator is responsible to develop protocol. Okay. Uh, then data management plans. What you understood in data management plan? Start with the what is the data management plan? Yes.
In layman language, how you explain data management plan? Data management With proper. plan is the document Mm-hmm. that says how data will be handled during the clinical trial from Mm-hmm. Mm-hmm. Okay. describe the purpose of clinical trial, goals of the data management. Yes. And what input document we are using to create data management plan? Protocol we are using. Yes. Or CRF design, is report form. approved protocol, approved CRF. Huh? Study timeline, vendor information. Yes. Site details. So yes. So these. Ma'am, you are not audible. Are you there? Yogita ma'am, are you there? I think madam is not on. Acha, ma'am told that done from my side. Means today's class is over. So do you have any query in today's session? No. Yes? Yes, students, any query? Yes, ma'am. What's the query? Ma'am, what is the tentative data? Yes, Mohit, ma'am will be there in 2 minutes, okay? So she will told the answer. Yes, ma'am, are you there?
Yes, any question? Yes, Mohit, now you can ask your question. मैम Yes. मैम टेंटेटिव डेटा क्या होता है मैम? हाँ, टेंटेटिव डेटा टेंटेटिव डेटा मीन्स जो डेटा है उसको मतलब हमारा डेट फिक्स नहीं होता, बट हमें एक डेट देना होता है, तो वो डेट के नियर बाय एटलीस्ट हम पहुंच गए तो उसको टेंटेटिव बोलते हैं. सो नॉट फिक्स्ड, नियर बाय बोल सकते हैं हम उसको. के समझा? यस मैम. ओके. मैम लास्ट क्वेश्चन. हाँ हाँ, एडिट यू कैन आस्क. एडिट चेक स्पेसिफिकेशन से रिलेटेड है मैम. मैम उसमें एडिट चेक स्पेसिफिकेशन में जो मतलब प्रोग्राम एडिट चेक होता है उसमें क्वेरी ऑटोमेटिक फायर हाँ होती है, लेकिन हाँ, मैनुअल चेक में कैसे होती है मैम? मैनुअल चेक में जो डेटा मैनेजर्स होते हैं उनको जाके मैन्युअली क्वेरी रेज करना होता है. ओके मैम. डेटाबेस में जब भी हम डेटाबेस का ट्रेनिंग लेंगे तभी मैं आपको बताऊंगी. मैं ऑलरेडी बताया था कि कैसे क्वेरी रेज करना है डेटाबेस में. ओरेकल क्लिनिकल में जो टैब होता है वो टैब में प्लस साइन पे क्लिक करके मैनुअल क्वेरी कैसे रेज करते हैं, फिर मैनुअल क्वेरी रेज करने के बाद कैसे वहां पे हमारा नाम लिख के आता है. तो जो क्वेरी हमें मैन्युअली करना है जाके हम करते हैं, रेज करते हैं डेटा मैनेजर, उसको मैनुअल बोलते हैं. और जो क्वेरी अपने आप फायर होगा उसको ऑटो क्वेरी बोलेंगे. ओके मैम. ओके. तो कोई चेक ऐसे होते हैं कि जहाँ पे हम जो है सिस्टम जो चेक्स नहीं लगा सकते, प्रोग्रामर को कुछ लिमिटेशंस होता है. सो ऐसे जो चेक्स होता है वो हमें परफॉर्म डेटा मैनेजर को खुद से जाके परफॉर्म करने होते हैं, खुद से जाके क्वेरी रेज करना होता है. तो उसको मैनुअल बोलेंगे हम. मैनुअली जाके क्वेरी रेज करना मतलब मैनुअल चेक. ओके मैम. समझा? ओके. सो यस, एनी अदर क्वेरीज स्टूडेंट? Yes, any other query, students? I think there is no query, so we'll wind up the today's class. And sorry for the inconvenience in today's class. Okay, it's happened due to the internet connection. So sorry. And anything you want to ask, you can ask. Otherwise, we'll wind up the class. Yes, students. Yes or no? Quickly unmute and answer. No, Neha, ma'am. Vishakha, Dhaya, No Nikita, मैम. Sweet, Joanna, Sonal, Shivani. No, madam. No. Okay. So we'll conclude the today's class. I will share recording of this. Ma'am, Okay, thank you. please share today's PPT in our group and what is the assignment? Please share. Yes, yes. Yes, we share. Yeah. Thank you. Yes. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you.